with full heart and prepared this building to educate India and to make it self-reliant. In this lieu, we are celebrating our 76th Republic Day. As you can see, our parade team, NCC team is ready. Our chief guests have been arrived. वतन की मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है कि वतन की मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है तो दिल में बस यही गूंजता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सारे मिलकर जयकारा लगाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Freedom in mind, faith in our heart, memories in our souls. Let's salute the nation on this Republic Day. So, it's a popular slogan and let's say it all together. Jai Hind! Now, we are starting our day. First of all, we will welcome our guests. Our chief guest, Mr. Bharjwan, who is also the chairperson of this school, and मुख्य अतिथि महोदय द्वारा तिरंगा फहराने के लिए मैं निवेदन करूंगी कि श्रीमान यशपाल जी और सुषमा मैम तिरंगे के लिए आए। तिरंगा सिर्फ रंगों का महत्व, तिरंगा के 3 रंगों का अपना कुछ खास महत्व होता है। we invite our chief guest to hoist the flag. Sir, will you? केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है। हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतीक होता है। आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का गौरव हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान यशपाल भारद्वाज जी को प्राप्त हो रहा है। मैं सम्मान पूर्वक उनसे निवेदन करती हूँ कि वे ध्वज फहराएं। Tricolor. भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के साथ-साथ Tricolor is the symbol of India, our nation. Now, the national anthem. हमारे तिरंगे की शान सदैव बनी रहे, हमारी यही कामना है। यह ध्वज केवल सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी आजादी का प्रतीक है, हमारे शहीदों का सम्मान है, हमारे गौरव का प्रतीक है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। भारत धरती के कण कण में त्याग बलिदान का अमित प्रेम की कहानी छुपी हुई है।
इस मिट्टी में अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने हर पल अपनी मातृभूमि पर गर्व किया है। सचमुच ये धरती है जहां शूरवीरों ने अपने खून से इस धरती को सींचा है। Now, our NCC students will give the salute of honor to our chief guest. इधर आ बेटा, खुशी हो रही है, लाइन में चलेंगे। The National Day Parade, it shows the valor of our armies, the three wings of armies, the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force represent the true strength of India, the true strength of the love for our nation. These NCC cadets represent their valor, their love for the country, discipline, and dignity to pay off all their duties for their countries. Youth is the backbone of each and every country. They will make our future. They are the future of India. They are the future of Viksit Bharat. That is the dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. He dreamed to make India a Viksit, a developing country in 2047. Our chief guest receiving the honor from the parade marking the day memorable. Parade on Rajpath or the Kartavya Path, as we know it now, the new name given to it, the Kartavya Path. The parade on Kartavya Path shows the strength of real India, its military strength, its cultural empowerment, and what we have given to the whole world. The Indian culture is praised all over the world. यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और अनुशासन का प्रतिबिंब होता है। With discipline, we can do any task possible. We can make any difficult task possible with the discipline. And our armies show this discipline and valor. सलामी देते हुए कदम से कदम मिलाते ये जाबाज सैनिक, जिनके जूतों की धमक से आज यह मैदान गूंज उठा है, यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और अनुशासन का प्रतिबिंब है। जब तक ये सीमा पे तैनात हमारे सैनिक हैं, तो भारत का तिरंगा हमेशा ऐसे ही ऊंचा रहेगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। Very well said. Our PTI sir the tricolor, symbol of patriotism, to our chief guest.
requested a valor, a vigorness in our blood circulates and our whole body feels some kind of positive energy. आज की परेड हमें यह संकल्प दिलाती है कि हम अपने देश के विकास में अपना योगदान देंगे और इसके गौरव को कभी कम नहीं होने देंगे। इसी जोश और जुनून के साथ our brilliant student Kanak from class 11 Commerce, she has received a beautiful prize at district level. She got third prize in essay writing competition that was held on 19th of December 2025 on the topic कोई वोटर पीछे ना छूटे, कोई मतदाता पीछे ना छूटे. No, I shall request Kanak, wherever she is, come forward, Kanak. She is in the parade. Now I would request our chief guest and our principal ma'am to give her honor. जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। She received this certificate and the cash memo of 1000 rupees from the SDM of Panipat जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यही ये बच्ची साबित करती है। चाहे गेम हो या पढ़ाई का मैदान हो, चाहे कुछ भी हो, हर फील्ड में ये बच्ची हमेशा आगे रहती है। इसने हमारे स्कूल को गौरवान्वित किया। आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो कि जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठी पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। She has also won the district level Kabaddi tournament last month. Congratulations to Kanak. You are really a star and you make us feel proud. Make the NVM family feel proud. Once again, give her huge round of applause. Well done, Kanak. This will motivate other students also to participate in other co-curricular activities and in sports activities also, so that you can bring good name to your parents, to your family and school as well. Now, I would like to invite Nancy ma'am. She will give you some words on Republic Day. Nancy. Honorable Chairman Sir and Madam, respected Principal Ma'am, my dear colleagues and my lovely students. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Today is not just another holiday on the calendar. It is a very special morning because we are celebrating the 76th Republic Day of our proud nation, India. A day when our country did not just get independence, but got direction, discipline, and a constitution. On 26th January 1950, India became a republic. That means the real power came into the hands of the people. And looking at my students, I feel happy thinking future ministers, doctors, teachers, scientists, and even future principals are sitting just right here. As a teacher, I see India every day in my class, in different languages,
in different cultures, in different talents, and sometimes in different handwriting styles also. Some handwritings looks like art, some looks like ECG reports, but all are part of India. Our constitution teaches us equality, freedom, and responsibility. But my dear students, let me tell you one honest truth. A good citizen is not only made by mark sheets. A good citizen is made by values. Coming to school on time, respecting teachers, helping our classmates, not cheating in exams, and not bullying others. These are also the acts of patriotism. Our freedom fighters did not fight so that we could fight with each other. They fought so that we could become educated, disciplined, and responsible citizens. Sometimes students ask me, Ma'am, how can we serve the nation? We are too small. And I smile and say, study honestly. Respect your parents. Respect your teachers. Protect your environment. Speak truth. And be kind. This is the real nation building. B.R. Ambedkar just said, Constitution is not just a document. It is a way of life. Let us promise today to be good humans first, good students next, and great citizens all. I feel proud to be a teacher in this school because this school is not just building careers, it is building character, it is building citizens, it is building the future of India. Let us pray together and say from our hearts, we will study with honesty. Yes, students, are you hearing me? We will study with honesty. Put your hands on your hearts and say, we will study with honesty, we will live with values, we will serve with love, and we will make India proud. May our tricolor always fly high. May our nation always stay united. May our students always shine bright. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, Nancy ma'am, for your words. I hope students will get your words, the basic essence behind your words, and will work for their parents, for the school, and most of all, for their. Thank you, Nancy ma'am. Now, we have a little star, Avni. She will sing a beautiful song, patriotic song for you. Kindly welcome Avni. Please come with her. Welcome her with claps. Good morning everyone, my name is Avni from class 30. Today I am going to represent our song. संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो मुझे जाती है। घर कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो मुझे जाती है। कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये तुम बिन ये घर सोना सोना है। Thank you, have a nice day. Very melodious voice. God bless you, dear. Wonderful. So please give a huge round of applause once again. Very nice. And she has prepared in morning only. Thank you, Vita. Thank you, Avni. Now, I would like to invite the girl child of class 3rd who will represent a beautiful dance performance in front of you. Desh Rangila Mera. Yes, indeed, India is a very colorful country with colorful languages, colorful culture, and beliefs, thoughts, customs. Everything is so colorful. We live in so much colors, and even our
tricolor is also very colorful. थर्ड क्लास के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं, हमारी भारत की आन बान और शान को दर्शाने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए। सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। The little Bharat Mata, Purvi of class nursery, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। खाने पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर तारे अंबर है, नदी सुनहरी हरा देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सचमुच इन कलाकारों ने अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से दर्शाया। धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। very well performed. As you all know, today we all are celebrating. India has successfully completed the 76 years of its sovereignty, of being a republic. As you all know, we have adopted our constitution on 26th January 1950. To remark this day, we all celebrated Republic Day. This is the first day of our 77th Republic Day. It's been started today. As you all know, Republic Day marks the day that Dr. B.R. Ambedkar is dreamed about an India where equality profess. Now, this parade or this Republic Day celebration that marks the equality and liberty of India. In our preamble, we have promised the citizens of India to give them equal opportunities and justice on each behalf. Students and the valuable judges and all my staff members, as we all know, on the Republic Day, our Honorable President hoists the flag on the Red Fort. As President Draupadi Murmu highlighted in her 2026 speech address to India, India is currently the world's fastest growing major economy. We recently celebrated the 150th anniversary of Vande Mataram and the success of Operation Sindoor against the terror infrastructure from our neighboring countries. Our true progress lies in upholding justice, liberty, and equality. And as the youth of the nation, we are the flag bearer of this journey towards a development and towards the making India a Viksit Bharat till 2047, which is the dream
of our Honorable PM, Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Now, I would like to invite the students who will show the religious harmony that is in India. Someone tried to destroy it sometimes or whenever we try to celebrate some auspicious days, but we and these students will tell you how to be in harmony. How so many religions, languages, cultures there may be, but we are still united. We are Indians and will united together and always to show the world that we are in one. India is one, united. Rather of its so many diversities, India is one. Now the students, I would like to invite the students of who will show you how there is religious harmony in India. I would like to invite the students of 9th class and 11th class. Kindly come on the stage. Ma'am, she wants to sing a song. Okay. Please give her. Meanwhile, Puru will sing a beautiful song for you. तेरी उंगली पकड़ के चला ममता तेरा चल मैं पला माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूँ उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूँ लगूँ तुझे बल को तरे पूजा करूँ तेरी तू ही बता तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में डला तेरी उंगली पकड़ के चला. So nice, wonderful. Now the students will represent a debate show in front of you. कैसे खड़ा होना है बता दो. One pair will stand here. हाँ हाँ उसी तरह से ठीक है. Yes. सेमी सर्कल बनाना. तो अंदाजा पा रहे कि लड़के आज बहुत सारे भारतीय धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं या बाहरी ताकतें उन्हें लड़वाने की कोशिश करती हैं धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पे. तो आज ये बच्चे आपको बताएंगे कि आप कैसे एक बने रहें और जो विभिन्न सवाल हैं जिनको मुद्दा बनाकर वो आपको लड़वाते हैं तो वो मुद्दों का आप जवाब दे सकें अच्छे से. ये जानकारी आपके लिए अहम होगी.